Okay, now we are going to continue with basics of biological anthropology. Let me open the book. But as I have told all of you that we are not going to read that basic, little beyond basics, okay? यहाँ तक तो कोई no confusion, okay? We'll see neo-Darwinism. That's when we have accepted Darwin theory, but then again added something more on it. Okay? Neo always mean existing theory जो है उसको we have accepted, but then working on its flaws and explaining something new on it. Okay? So Darwin could not explain. देखो point क्या था? Darwin ने could not explain variations. पहला point. Okay? उन्होंने बस बोला था variations are there. Simple. Okay? Then Hugo de Vares, a Dutch botanist, proposed the mutation theory. एक लिखेंगे mutation theory of evolution. According to this, new species evolved from earlier species not by natural selection, but by sudden heritable changes in the genotype of an organism, which he called mutation. That's mean X and XY इन दोनों का जब रिकॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ पे जो आपके जीन्स हैं या फिर जो डीएनए है इसमें सडन चेंजेस हो गए, उसके वजह से वेरिएशंस है. फॉर एग्जांपल, आई हैव बोरोड फॉर आई कलर जीन ऑफ ब्लैक फ्रॉम माय फादर, ब्लू फॉर माय मदर, बट ना ब्लैक है ना ब्लू है, समथिंग एल्स. तो क्या हुआ? जैसे सडन अलग से कुछ चीज होगी. Okay, so according to him, mutation is the chief cause of variation, which leads to the formation of new species. Mutation theory distinguish heritable variation from environmental variation, which Darwin failed to understand. अब यहाँ पे हमारे पास आया तो combination of mutation theory, Darwin theory. अब जो हमारे पास theory है वो synthetic theory of evolution है. ठीक है, तो genetic drift, जेनेटिक जीन रिकॉम्बिनेशन, ये थोड़ा सा मैं आपको पूरा मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी अलग से एक्सप्लेन करूंगी. राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू व्हाट इट इज हियर रिटन. नाउ अदर स्टूडेंट्स whosoever are now taking recorded lectures और my NCERT students like YouTube में जो ऑनलाइन देख रहे हैं, you people have to understand this very crucial point that you people need to again revise it. आपको मैंने एक बार ही पढ़ाया, उसके बाद आप लोगों को रिवाइज भी करना पड़ेगा. ओके, सिंस आई एम टीचिंग बेसिक्स, so I am not going to explain everything in a very slow pace. Although with bio I am trying to be really slow in speaking, but with dictation, yes, I admit this that my speed of dictation is fast. So it's your responsibility to tell me कि मैम जब तक हाँ slow down. Okay, everyone. फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन स्टूडेंट कॉल्ड राधिका, उनको यही है कि मैम डिक्टेशन नहीं लिख पा रहे हैं, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को जल्दी बता रहे, क्योंकि आप लोगों का तो मैं देख लेती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं रिपीट करती हूँ जैसे मुझे लगता है कि आप लोगों का रह गया है, बट ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को बताना होगा. ओके, सो व्हेनसोएवर आई वुड बी गिविंग डिक्टेशन, बिकॉज अभी मॉडर्न थ्योरी में मैं डिक्टेशन दूंगी, ऑनलाइन एस्पिरेंट्स डू टेल मी दैट. ओके, हाँ, तो पहले एक बार जेनेटिक ड्रिफ्ट देख लेते हैं. द रैंडम चेंजेस इन द जीन फ्रीक्वेंसी, तो जीन्स में जो चेंजेस आएगा उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट. अकरिंग बाय चांस अलोन, द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज वेरी स्मॉल इन अ लार्ज पॉपुलेशन, बट इट इज लार्ज इन अ स्मॉल पॉपुलेशन. देन जीन रिकॉम्बिनेशन, द reshuffling of gene combinations which provides new combinations of existing genes during crossing over is called gene recombination. Since recombination adds new genes combination in the gene pool, it is considered as an agent of evolution. You can read अभी बाद में. Darwinism in its origin form failed to explain
ही कुड नॉट एक्सप्लेन कि भाई एवोल्यूशन एंड द ओरिजिन क्या मैकेनिज्म क्या है, एक मैकेनिज्म है ना, वो एक मैकेनिज्म इन्होंने सिस्टमैटिकली नहीं एक्सप्लेन करा, बस सिंपली याद करेंगे, ठीक है। तो ये जो ड्रॉबैक था, उसके बाद हमारे पास काफी सारा, काफी लाइक यू नो देयर वर लॉट मेनी साइंटिफिक रिसर्च गोइंग ऑन जस्ट टू नो एग्जैक्टली about how evolution or variation is occurring. So new synthetic theory is the answers to that. It's a combination of lot many theory. So in the middle of 20th century, okay, तो जेनेटिकलॉजिकल ये सारे पार्ट्स आए, जहां पे हम कह रहे हैं बहुत सारे फैक्टर्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, सच एज नेचुरल सिलेक्शन, जीन रिकॉम्बिनेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, म्यूटेशन, माइग्रेशन, हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, Mendelian plus natural selection and all this theory. This principle is explaining about how we are getting traits or the variations. Okay. So what is new synthetic theory? Combination of various theories. यहाँ से देखेंगे. Amalgamation of various concepts, natural selection, mutation, Mendelian principles, drift, combination, and population genetics. Okay, but it is interesting to note that modern genetics does not acknowledge the mutation theory in its original form. Okay, yes, modern synthetic theory. ओके, अब विल स्टडी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ये थोड़ा सा हमने, क्योंकि ये बेसिक्स है, राइट, 11th क्लास की बुक है, तो उसमें बहुत ज्यादा हमको नहीं डीपली नहीं समझाया, बट आई वुड बी एक्सप्लेनिंग इट इन अ वेरी डीपर मैनर। इज दिस नाउ क्लियर यहाँ तक? ओके, और इस पे से यू पीपल डू नॉट हैव टू इवन मेक द नोट, you will copy it out. Since you people are saying that ma'am your speed is too fast, so I have decided to write more and speak less. Give a heading to modern synthetic theory, or you can also call it modern synthesis. Modern synthesis, okay? So what is the status of this theory? It is widely accepted currently, okay? So modern synthesis is widely accepted. Widely accepted explanation of how evolution occurs. बस ये लिखेंगे widely accepted theory for how evolution occur. Okay, you can say Darwin's theory of natural selection. क्या है natural selection? ओके, नेचर एनवायरमेंट में जो भी फिट होगा वो आगे जाएगा, इसको ऐसे समझेंगे। ओके, मेंडेलियन जेनेटिक्स, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स, दोनों ट्रेट्स हमारी बॉडी में है और वो अपीयर होते हैं 3:1, ये सभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड देन जेनेटिक्स एंड ऑल दैट, पॉपुलेशन थ्योरी, सो फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी है, जेनेटिक्स भी है, पैलेंटोलॉजी एंड ऑल दिस पॉइंट। तो अगर हमें अभी बात करनी है कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या है, तो आप क्या बोलोगे ऑनलाइन एस्पिरेंट्स? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, लिखो। तो मॉडर्न सिंथेसिस, अभी आई थिंक Yuvraj have correctly said combinations, like you know, you can say combination of various concepts. Darwin, Mendelian, natural selection, recombination, genetic drift,
isolation, reproductive isolation, etc. Okay? Now, I will be writing key components of the modern synthetic theory. तो हम यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे, key components of modern synthetic theory. लिखेंगे पहला जेनेटिक वेरिएशन. अब यहां से आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा. ओके, जेनेटिक वेरिएशन में कीप राइटिंग फ्रॉम हियर. आई एम डिक्टेटिंग. ओके, एंड डू लेट मी नो इफ आई एम डिक्टेटिंग लिटिल फास्टर. हाँ जी, लिखेंगे जेनेटिक वेरिएशन में दैट evolution begins with genetic mutations, comma, recombination and gene flow, comma, which introduce variability in population. Evolution begins with genetic mutations. Evolution begins with, बताइए, genetic mutation. Very good. Recombination and gene flow. यहां से फिर कॉमा लगा के which introduce, बताइए, in population. ठीक है, which introduce variability in population. इन पॉपुलेशन. ठीक है, दूसरा लिखेंगे नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन. ओके, अब आप लिखो फेवरेबल ट्रेट increase, favorable traits increase an organism's chance of survival and reproduction, comma, leading to gradual changes in a population over time. Okay, so what we are doing, we are understanding the mechanism of evolution. So the first important point which we have just discussed, that evolution begins with genetic mutations. रिकॉम्बिनेशन हुआ, जीन फ्लो हुआ, अब यहाँ पे हमें वेरिएशन देखने को मिल रही है. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेचुरल सिलेक्शन. नाउ दोज जीन्स व्हिच इज नाउ देयर द सर्वाइविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे काउ, अब उन काउ पे वो वाले जीन्स होंगे जो कि फिट है. ठीक है, फॉर एनवायरमेंट. तो अब क्या होगा, उनका सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन का चांसेस बढ़ेगा. तो
what you will see favorable traits. एक काउ, लेट्स जस्ट से के एग्जांपल हम इस तरीके से ले लेते हैं, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, ओके, इनके पास एक अपना अलग जीन्स है, एक और अलग हमारे पास पर्टिकुलरली ऑर्गेनिजम्स है, ये एक अलग जीन्स है, क्रॉसिंग ओवर हुआ, ओके। अब इनके से म्यूटेशन हुआ, एक रैंडम हमारे पास कोई जीन्स अब आ गया, ओके। अब ये जो आया होगा एक ऑर्गेनिज्म, वो स्ट्रॉन्गर होगा, राइट। तो नेचुरल सिलेक्शन हम यहाँ पे कैसे ले रहे हैं कि अब हम इसको ऑर्गेनिज्म नहीं, वो ट्रेट्स जीन समझते हैं। तो यहाँ के जो आपके ट्रेट्स हैं, आपके जो जीन्स हैं, वो चांसेस सर्वाइवल के इंक्रीज कर देगा। समझ में आ रहा है ना? नेचुरली यू वुड से कि सर्वाइवल उसका इंक्रीज होगा तो रिप्रोडक्शन का भी होगा, वो रिप्रोड्यूस भी करेगा, और म्यूटेशन तो हो ही रहा है, लेकिन उसकी वो जीन्स रहेंगे, एंसेस्ट्रल जीन्स, that would leading to gradual changes in population over time. ये एक पर्टिकुलर अब क्या है, फैमिली ट्री चल रही है, ओके। अब यहां से जैसे अलग से कोई एक रिकॉम्बिनेशन हुआ, फिर एक हमारे पास एक और ट्रेट्स आ गए, धीरे धीरे जो यहां से स्टार्ट हुआ होगा वो यहां से आते आते चेंज हो गया, ग्रेजुअल, ठीक है। चलिए लिखेंगे नेचुरल सिलेक्शन के लिए फेवरेबल ट्रेट्स, लिख दिया, पूरा लिख दिया, इन पॉपुलेशन ओवर टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे जीन फ्लो, मैं भी आपको सिर्फ और सिर्फ की कंपोनेंट्स लिखवा रही हूँ। जीन फ्लो, FLOW, मूवमेंट ऑफ जीन्स between populations, movement of genes between population helps maintain genetic diversity and can introduce new traits. अब इसके पास एक न्यू ट्रेट्स होंगे ना, तो जीन फ्लो। नेक्स्ट आएगा आपका जीन ड्रिफ्ट, random changes in gene frequencies, comma, especially in small populations. हाँ, क्या लिखा है? रैंडम चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसीज, कॉमा, स्पेशली इन स्मॉल पॉपुलेशन, कॉमा, कैन लीड टू एवोल्यूशन। अब यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन का कोई रोल नहीं है, कैन लीड टू एवोल्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा की कंपोनेंट लिखिए म्यूटेशन, म्यूटेशंस इन डीएनए mutations in DNA are the ultimate source of new genetic variation, comma, क्या लिखा है? म्यूटेशन इन डीएनए आर द अल्टीमेट सोर्स, ठीक है, आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ न्यू जेनेटिक वेरिएशन, कॉमा, प्रोवाइडिंग न्यू रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन।
Can you people once repeat all the components? Yeah, Yuvraj, please read. सिर्फ की components. ठीक है, अब लिखो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. When population of a species when population of a species become isolated, comma, they may evolve into new species, जिसको आप कहेंगे स्पीसिएशन. साइड में लिख देना. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया. अब ये जो पॉपुलेशन है, व्हेन अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज बहुत आइसोलेटेड हो गई, ठीक है, अब वो कुछ और स्पीशीज में भी बन सकती है. सो दे मे इवॉल्व इनटू अ न्यू स्पीशीज. अब 7 लिखो. ग्रेजुअलिज्म. And punctuated equilibrium. BRIUM. ब्रियम. देखो इसके लिए पहले तो वही है कि एवोल्यूशन सडन प्रोसेस नहीं है, इट इज अ ग्रेजुअल इवेंट. तो इसके लिए लिखेंगे एवोल्यूशन कैन अकर ग्रेजुअली ओवर टाइम और रैपिड बर्स्ट भी हो सकता है. और इन रैपिड बर्स्ट अगर इन्वायरमेंटल चेंज हो गया तो, और इन रैपिड बर्स्ट ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस. हाँ, इन्वायरमेंटल चेंजेस को आप ब्रैकेट में लिख दो, जेनेटिक शिफ्ट. आप यहाँ पे ना एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाओ साइड में. देखो कंट्रीब्यूटर्स. ठीक है, पहले देखो डॉब्ज़ान्स्की. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है हमारे लिए. फुल नेम भी लिख लो. थियोडोसियस डॉब्ज़ान्स्की. और स्पेलिंग प्लीज चेक करते रहना, बिकॉज ऑफन आई मेक स्पेलिंग मिस्टेक. डॉब्ज़ान्स्की. ओके. हाँ, इन्होंने क्या किया, थियोडोस डॉब्ज़ान्स्की ने क्या किया था, डार्विन थ्योरी से जेनेटिक्स को इंटीग्रेट कर दिया था. इंटीग्रेटेड लिखो साइड में, ऐसी कुछ हाइफन कुछ बना लो, कुछ भी साइड में लिख लो. इंटीग्रेटेड जेनेटिक्स विद डार्विन थ्योरी. डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन करा, इन्होंने वही नेचुरल सिलेक्शन को इंटीग्रेट कर दिया जेनेटिक्स में, कि जब जीन्स रिकॉम्बिनेशन होते थे उसमें जो उस जाइगोट में वो ही सारे हमारे पास ट्रेट्स आते हैं, जो भी वो जीन्स या फिर जो एलील्स है वो उस एनवायरनमेंट में स्ट्रांग होते हैं. बस ऐसे. ठीक है, मैं बहुत सिंपल लेमैन में एक्सप्लेन कर रही हूँ राइट नाउ. ठीक है, इंटीग्रेटेड जेनेटिक्स विद डार्विन थ्योरी. अब दूसरा लिखो अर्नेस्ट मेयर.
ERNSTMAYR, ठीक है। इन्होंने कॉन्सेप्ट स्पीशीज एंड स्पीशिएशन का डेवलप किया था। डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड स्पीसिएशन के ग्रेजुअली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बाद क्या होता है, न्यू स्पीशीज भी फॉर्म हो सकती है। तो डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड स्पीसिएशन, ठीक है। और देखो जूलियन हक्सली, इनका साइड में लिख लेंगे। इन्होंने एक्चुअली मॉडर्न सिंथेसिस को काफी पॉपुलराइज किया था। सो पॉपुलराइज द मॉडर्न सिंथेसिस। सी वॉलरेट JBS Haldane, okay, then Ronald Fisher. Population genetics model. Develop population genetics model. Genetics model. ओके, अब साइड में लिख दो कहीं, जैसे आपने ये कंट्रीब्यूशन लिखा है ना, वहीं पे एक और प्लेस बना के लिख दो सिग्निफिकेंस, कहीं साइड में लिख लो सिग्निफिकेंस। हमेशा ट्राई टू राइट सिग्निफिकेंस ऑफ दैट थ्योरी, एक्सप्लेनेशन। तो एवोल्यूशन ये क्यों हमारे लिए अच्छा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट एक्सप्लेन एवोल्यूशन देखो इन टर्म्स ऑफ जीन्स एंड पॉपुलेशन रेदर देन जस्ट इंडिविजुअल्स। What is the major significance of modern synthetic theory? Explaining evolution in terms of genes and population, not simply for individuals. And the major role of modern synthetic theory, it is helping us to understand a connection between microevolution, जो आपके DNA में changes हो रहे हैं, with macroevolution, large scale evolutionary patterns. तो ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस के डीएनए में चेंजेस होते 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 होमोसेपियन सेपियंस। ओके, सो ब्रिजेस माइक्रो एवोल्यूशन, ब्रैकेट में लिख लो स्मॉल जेनेटिक चेंजेस विद मैक्रो एवोल्यूशन, large scale evolutionary patterns, definitely helping us to understand basics for modern evolutionary biology, और बायोडाइवर्सिटी को भी समझने में हेल्प करता है, ये भी लिख सकते हो। बायोडाइवर्सिटी में भी लिख सकते हो। मॉडर्न एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को तो बेसिस है ही, बेसिस फॉर मॉडर्न एवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड सपोर्ट्स आवर अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। Is this now clear, all of you? When I would be teaching you again 1.4, तब मैं बहुत डीपली आपको जेनेटिक वेरिएशन एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन टू द डिफरेंसेस इन डीएनए सीक्वेंस, इन डीएनए सीक्वेंसेस, ओके, अमंग इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन। तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द मटेरियल। समझ रहे हो आप लोग, ऑनलाइन एस्पिरेंट्स, यू पीपल आर नॉट राइट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, तो फिर वही आप लोगों को इसको समझना होगा। फिर जेनेटिक वेरिएशंस कैसे लीड होता है, उसके भी की मैकेनिज्म्स हैं, म्यूटेशंस हैं,
ठीक है, फिर रिकॉम्बिनेशन एंड ऑल दैट। तो अभी के लिए आई एम नॉट गोइंग दैट डीप, बट अभी बस मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी आप लोगों को इतना, राइट नाउ यू पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस, ओके। सो आफ्टरवर्ड्स व्हेन आई वुड बी इन जनवरी, आपका दो तरीके से क्लासेस चलेंगी, मंडे टू फ्राइडे हियर, and Friday, Saturday, Sunday, biological. Okay? Because I'm planning to finish your syllabus by March. March में 70%, then April रहेगा. April will be for 2 days only. So Saturday, Sunday, bio part will be, हाँ, ऑनलाइन लिंक आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी, तो उस पे आई वुड बी एक्सप्लेनिंग इट मोर, ओके। इज दिस क्लियर? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, सो दिस इज, देन यू डू हैव लॉट मेनी अदर पार्ट आल्सो सिलेबस में, इन योर 1.4 का सिलेबस में, इन एंथ्रोपोलॉजी क्लास 11th में इतना नहीं दिया हुआ है, ओके। But 1.4 में we are going to understand more, okay, with respect to human evolution, Gauss principle and then rules, this and that. So the 1.4, one section is with respect to theory of evolution, which we have discussed. Then other part is with related to biological concepts. They are just concepts, they are not facts. Okay, it's very easy also. Now, let's quickly read this. Human being is the product of evolution. We understood this. Okay, or you just go and read it. Okay, the origin of single cell species from organic molecule, like organisms like virus, which are earlier to amoeba. The origin of single species from organic molecules was the most complex step in evolution. It might have consumed the same extent of time from protozoa to human. So, to examine how humans have evolved, the knowledge of other species of the animal kingdom, phylogenetic position is also important. तो यहाँ पे अब हम कहाँ जा रहे हैं, बायो के दूसरे पार्ट पे जा रहे हैं। अभी तो हमको ये समझ में आ गया that how we have got evolution and we are also understanding variation, but to understand completely about humans origin, we need to borrow from other disciplines. So now we are moving to phylogenetic status, okay, classification of animal kingdom. So this is actually part of your 1.5. ये बहुत important है, and from this only you would make notes, like what is this, SERT, okay. Write down the Carl Linnaeus. So he has made classification of living organisms. He called human as Homo sapiens, Homo being the genus and sapiens the species. So taxonomic classification of organism. So there was a time when we used to get a question of 10 marks. Classification, Carl Linnaeus, classificatory system. Okay. I'm giving you 5 to 10 minutes. Beautifully make this picture. Taxonomy of animal kingdom. Okay. I am no in hurry. You people take your time and make.
So this flow chart would further give you more understanding. ठीक है? So what he has done, he has given the division. ठीक है? Animal kingdom and also plant kingdom. Here we are interested only in animal kingdom. Okay? So the kingdom here is animal kingdom. Now the sub kingdom that is coming under animal kingdom, one is protozoa. Always remember, ठीक है? Divide कर दो, protozoa. Simple है? Then metazoa. Meta तो आजकल metazoa. Okay? अब हम यहाँ से हट गए, हम मेटाजोआ में यहाँ पे आ गया, तो प्रोटोजोआ, मेटोजोआ, किंगडम, सब किंगडम, फाइलम. ठीक है, अब हम फाइलम में आ गए. अब फाइलम में हमारे पास अगेन दो चीज आ गई, नॉन कोर डेटा, कोर डेटा. याद हो गया? थोड़ा सा 3-4 बार यू पीपल विल रिपीट, मेरे साथ रिपीट करो, याद हो जाएगा. कार्लिनियस, डिवाइडेड, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम. किंगडम में प्रोटोजोआ, मेटोजोआ, फिर किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद बताओ जल्दी, नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा. हम कहाँ पे जाएंगे? कॉर्डेटा. ठीक है ना? सो नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा. ओके. फाइलम के बाद क्या आ गया? सब फाइलम. तेज तेज बोलेंगे. सब फाइलम्स में हम कहाँ पे आ गए? इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स. एक बारी फिर से रिपीट करो मेरे साथ, एनिमल किंगडम से स्टार्ट करो. ठीक है, मैं क्लास में आपको याद करा दूंगी इन केस आ जाए. ओके, बायो को याद करने के लिए यही सिंपल ट्रिक्स है. बार बार उसको रिवाइज करो. तो जल्दी से बताओ, कार्लिनियस, प्लांट, एनिमल. किंगडम में हमारा आ गया ना कौन सा? एनिमल. तो फिर देख रहे हो सब किंगडम, सब किंगडम में प्रोटोजोआ, मेटोजोआ, फाइलम, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, सब फाइलम, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट. ठीक है, तो अभी हम देखो अपने एंसेस्टर्स की कैसे क्लोज आएंगे. ओके, अब आ गया सब फाइलम के बाद क्लास. ये हमारी थोड़ी ज्यादा हो गया. अब यहाँ पे हमारे पास स्पीसिएशंस हो गया, ऐसे समझो. ओके, स्पीसिएशन किसने थ्योरी दी थी? डिवायर्स, राइट. मैंने लिखवाया था ना कि एक और फेमस, देखो अपने नोट्स में, जल्दी से रिवाइज करो. आपके एससीईआरटी में ही है म्यूचुएशन थ्योरी, ये भी लिखा है आप लोगों ने. म्यूचुएशन थ्योरी पूरी लिखी है अभी आपने. म्यूचुएशन थ्योरी, चलो अच्छा देखना भी आप लोग. ठीक है, स्पीसिएशन तो बाद में आया ना. म्यूचुएशन थ्योरी ह्यूगो डी वायरस हमने पढ़ा था. ठीक है, चलो अब ओके, यहाँ पे आ जाओ. किंगडम, सब किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, क्लास. फिश, एम्फियंस, who are amphibians, sea and land both, reptiles, birds, mammals. ओके, मैमल्स. अब हम आ गए सब क्लास में. ओके, प्रोटोथेरिया. ठीक है, मेटाथेरिया, यूथेरिया. अब ये आप लोग पहले मुझे बताओगे, फिर आगे पढ़ेगी क्लास बिना देखे. हाँ, देन किंगडम, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, फाइलम, नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सब फाइलम, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, क्लास में फिश, एम्बियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स. फिर हम आगे सब क्लास में प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया. ठीक है, अब हम आगे ऑर्डर, इडेंटेटा, कैटेसिया, सेरिनिया, कीरोपेट्रा, एंगुलेटा, कार्निवोरा, इंसेक्टोरिया, रिडोंटिया, देन प्राइमेट्स. अगेन हम प्राइमेट्स में आ गए यहाँ पे, है ना. अब देखो आप सब ऑर्डर पे आए, प्रोसिमी, एंथ्रोपोडिया. हम बेसिकली यहाँ पे अब इंटरेस्टेड है.
सुपर फैमिली सेबोइडिया, सर्किपेटोइडिया, होमोनिडिया, देन फैमिली पोंगिडाई, हाइलोबेटाइड, होमोनिडे, जीनस आर्डिपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है, यहाँ से होमो, स्पीशीज हेबिलिस, इरेक्टस, सेपियंस, सबस्पीशीज होमो सेपियन नींडरथल, होमो सेपियन सेपियंस, ठीक है। नींडरथल्स भी होमो के ही है, राइट, वेरी क्लोज टू अस ओनली, और बहुत डिबेट है नींडरथल्स के ऊपर। ओके, वी आर गेटिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, प्रोग्रेसिव, क्लासिक, they just look like us only, but it is being believed that they were suffering from Down syndrome. Okay, so they could not survive. But it's all controversies, it's all discoveries. We do not know. Okay, नींडरथल्स के ऊपर बहुत controversies रहती हैं। समझ में आया? तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमी का मतलब ही क्या होता है? क्लासिफिकेशन। अब humans place in the animal kingdom. Living beings on earth are classified into two kingdoms, plant kingdoms, animal kingdoms. Animal kingdom is divided into two subkingdoms, namely protozoa and metazoa. अब protozoa क्या हो गया? Simple cellular organisms reproduce throughout asexual, मतलब sexual activity नहीं है, okay, asexual reproduction through cell division. Amoeba, the subkingdom metazoa to which the humans belong, have multiple cells and the features of sexual reproduction. Metazoa consists of two phylums, chordata, non-chordata. Chordata, to which human belongs, possess a dorsal nervous system. ठीक है, इसके बाद में आपका वर्टिब्रेट दिखेगा. Dorsal nervous system starting from the brain, it moves along with the spinal column, the internal bony segments of the spinal column. In the subphylum vertebrate, then chordata is classified into different classes, of which the humans ones under the mammals. The mammals are placed in the topmost position among the vertebrates. Vertebrates में topmost position में है. They are warm blooded. Warm blooded मतलब अपना maintain कर सकते हैं body temperature, ठीक है. ओके, वार्म ब्लडेड है और एबल मतलब मेंटेन कर सकते हैं. दो अलग पॉइंट है, वार्म ब्लडेड एंड एबल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है. दे हैव टू सेट्स ऑफ टीथ, डिसीडियस एंड परमानेंट. एक बच्चे पे होते हैं फिर दोबारा आते हैं, ठीक है. थ्री टाइप्स ऑफ लाइक टीथ, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स. Mammals have breasts and the mother nourish their babies with their own milk. The females of the mammals not only feed the young one, और यहीं से सोशल रिलेशनशिप भी हुआ. ये लिख लो, मेमोरी ग्लैंड्स आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग अ चाइल्ड बट ऑल्सो डेवलपिंग और द प्राइम रीजन ऑफ सोशलाइजेशन और सोशल रिलेशनशिप. हाँ, नहीं, बस एक पॉइंट अपनी लैंग्वेज में लिखो, दैट मेमोरी ग्लैंड, ये लिखा हुआ नहीं है तो मैंने आपको बताया है. मेमोरी ग्लैंड इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग बट ऑल्सो फॉर एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप विद द चाइल्ड. यहीं से इंसानियत की शुरुआत हुई है. So the class mammals or mammalia is again divided into three subclasses, namely Prototheria, Metatheria, Eutheria, the last of which include the placental animals. Eutheria, ठीक है, placental मतलब placenta है. Among them, the unborn young are developed into the maternal womb. The mother possesses placenta to nourish fetus. Okay, during its development before birth, directly from the bloodstream of the mother through placental plate. तो यूथेरिया हो गया. The subclass Eutheria is again divided into different order, of which the primates are placed at the top. The term means the human is placed in the order primates. ठीक है, अब ये लिखेंगे आप लोग सारे, the characteristics of the primates, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है 1.5 पेपर 1.
Primate come under which classification? Order or suborder? Order. Now लिख लिया आप लोगों ने? So when you will go back home, you people have to exactly copy it out, okay? This paragraph also in your notes. If I'm asking you to copy it out, please do copy it out. Why am I saying this? Because later on you will have more clarity, because writing in your own words, in your own handwriting would give familiarity to your neurons, minds, you know, neurons, okay? So the only challenge is with 1.5 and 1.6 that these words seems very new to us, okay? So the order primate is divided into two suborders, namely Prosimy and Anthropodia. ये सारा का सारा आपके notes में होना चाहिए. I would see myself, ठीक है? Pupiforms, Trisules, Tarsiform, Tarsiers, Lemuriforms and Lorsiforms are included in the suborder Prosimy. Prosimy में humans along with apes and monkeys are included suborder on Anthropoidea. Prosimy is like लगा लो कि they are like monkeys and other like animals. Humans, apes, monkeys, Anthropoidea. ठीक है, लिखो ये वाला लाइन ना अपने आंसर में जरूर लिखना है और हाईलाइट कर लेना. It is characterized by frontally located eyes, stereoscopic vision, and the bony eye socket. ठीक है. अब Anthropoidea contains three superfamilies: Old World Monkey, New World Monkey, Sebodia, Old World Monkey, Cacopithecidia, New World Monkey, Hominioidea. ठीक है. Humans along with apes belong to the superfamily Hominida. ठीक है. अब hominids बाद में देखेंगे भी. It's like humans only. They are characteristic. Tail नहीं होगी, absence of tail, cheek pouches, presence of 32 teeth. So the superfamily Hominidae consists of three families. ठीक है. Pongidae, Hylobatidae and Hominidae. ठीक है. देखो ये होमिन्यू आइडिया लगा लो इसे, और ये होमिनिडे. ठीक है. जब हम एडवांस करेंगे तो मैंने पूरा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, टेबल्स बनाई हुई है, होमिनिडी, होमिनिडाई, ओके, ऐसे करके होमिनिड्स, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. सो द लार्जर एप्स नेमली ओरेंगुटन, चिंपैंजीज एंड included in the family Pongidae, well, gibbons included in the family Hylobatidae, okay? The humans including the extinct and the living come under the family of Hominidae, ठीक है? Hominids. So which is characterized by the nasal bridge, जो हमारी है, vertical fleshy nasal groove, lumbar curve, bony chins, true erect posture and less body hair. Now Hominidae consist of different genus: Australopithecus, Ardipithecus and Homo. Humans are included in the genus Homo. So the genus Homo include different species like Habilis, Erectus and Sapiens. So Homo is considered sapiens. Homo sapiens sapien is modern men. Okay? Very important for us. एक भी चीज नहीं छूटनी है, आपके नोट्स में आएगा. So it is evident that in physical appearance human is having close resemblance with apes. But when we are included in the family Hominidae, apes are included in the family of Hylobatidae or Pongidae. Thus the above classification clearly illustrates that humans have many things in common with apes. While we become different species due to the differences that we have with apes, now we are understanding. ये आपका सिलेबस भी है 1.5 में, comparative anatomical changes between humans and apes. Apes are humans' closest relatives. So the modern and extinct apes and humans, which come under the superfamily Hominidae, all are known as hominoids. ठीक है, समझ में आ गया? The modern, आज का जो modern और जो extinct apes है, वो एक सुपर फैमिली में आता है जिसको कहते हैं होमिनिड्स. ओके, दे आर सब क्लासिफाइड इनटू थ्री फैमिलीज: हाइलोबेटाइड,
gibbon, Pongidae, and Hominids. So, representative of the family Pongidae, also known as great apes. The modern apes include orangutan, chimpanzees, and gorilla. So, gibbons पढ़ लिया आपने? Okay, ये पढ़ लेना. Gibbons क्या है? Orangutan क्या है? Just read. Don't have to make notes. Chimpanzees. इसके notes नहीं बनाने हैं. Gorilla. Okay, this you will have to make. Resemblance between humans and apes. None of them possess tail. Vermiform appendix is found in humans and apes. Blood of similar type. Structure of the uterus and placenta. ये सारा आप लिख लेंगे, ठीक है? ये लिखना है 96 पेज में जो है, और ये वाला चार्ट बनाना है. I think this is on page number, yeah. Now, in the phylogenetic chart, we found that the family Hominidae include 3 genus: Ardipithecus, Australopithecus, and Homo. How do we have traced this? By paleontological evidences. 1.6. Fossil evidences. Examine the early hominids. Okay, 1.6. In 1871, Darwin published his book, Descent of Man. लिखो बुक का नाम द डेसेंट ऑफ मैन, in which he described in detail the evolution of human. He observed that humans had evolved from some more primitive forms. According to him, the common ancestor of humans was hairy-tailed quadrupedal, probably with arboreal habits. The common ancestor had evolved from minute ape, from minute organisms of the remote past. Human evolution probably began with an unspecified arboreal climbing primate that we call ape. So paleontological evidence shows that the human evolution take place somewhere in Asia and Africa. Okay, ये लिखेंगे. Human evolution सिर्फ point लिखेंगे short. Asia and Africa, these two continents show greater number of fossils than that of Europe. Evidence show that all primates disappeared since Eocene epoch in North America. South America was dominated only by Platyrian monkeys. Humans entered in the New World from Old World. Okay, hence some strongly argue that humans originated first in Asia, while others argue that Africa. However, Leakey and his wife, they all considered Africa as the cradle of human mankind. तो ये भी important है paragraph. With respect to your 1.6, तो ये लिखेंगे. So humans are the most motivating, stimulating, talented, and exceptional of all organisms on Earth. In course of evolution, humans are the only animals that gain the capacity to create and sustain a way of life culture. The biological makeup unique to humans, we have got culture. ठीक है? अब बाइपीडियल फंक्शन कहाँ से आया? स्टीरियोस्कोपिक विजन कहाँ से आया? Dryopithecines लिखेंगे. It's who lived 20 million years ago, regarded as ancestor of both apes and humans. 3 वैरायटी थी, ड्रायोपिथिकस, रमोपिथिकस, गिगैंटोपिथिकस. रमोपिथिकस से हमारा humans आया. So human evolution based on fossil skeletal remains show that it had passed through 4 important stages, namely Australopithecines, Pithecanthropins, Neanderthal, and Cro-Magnon. ठीक है? Dryopithecines लिखेंगे who lived 20 million years ago. ये रिगार्डेड है एज एन एंसेस्टर ऑफ बोथ एप्स एंड ह्यूमन. ठीक है, इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन हो जाता है. तो ड्रायोपिथिसिन यहाँ पे ये कॉमन लिंकेजेस है. एप्स, ओके, लिखो इस तरीके से बनाओ, एप्स और ह्यूमन.
फिर ड्रायोपिथिकस के आपकी 3 वैरायटी है, ड्रायोपिथिकस, रमापिथिकस, गिंगैंडोपिथिकस। ये बनाओ। गिंगैंडोपिथिकस, रमापिथिकस, तीनों वैरायटी बनाओ। ड्रायोपिथिकस और गिंगैंडोपिथिकस पोंगिडाई फैमिली में। ओके, ड्रायोपिथिकस और गिंगैंडोपिथिकस कौन सी फैमिली में? पोंगिडाई। रमापिथिकस अलग फैमिली में, होमिनिडे। ओके, रमापिथिकस होमिनिडे। Human evolution based on fossil skeletal remains show that it had passed through 4 important stages. कौन कौन सी ह्यूमन एवोल्यूशन, 4 कौन से स्टेजेस है यहाँ पे लिखेंगे। अगर ह्यूमन एवोल्यूशन कई स्टेजेस में डिफाइन करूं तो 4 स्टेजेस है, 1 2 3 4। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलोपिथेसिस, पिथिकैंथ्रोपिन्स, नींडरथल, क्रो-मैग्नन, more like humans. It is believed that about 4 million years ago, in Pliocene epoch, the first undoubted hominid named Australopithecus having bipedal erect posture appeared on Earth. कब? 4 million years ago. कौन सी पीरियड? Pliocene epoch. ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेसिस, ऑस्ट्रेलोपिथेसिस कौन सा स्टेज है? हमारा पहला स्टेज। ऑस्ट्रेलोपिथेसिस रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेज ऑफ होमिनिड एवोल्यूशन. Australopithecines are ape-like in many respects. They are characterized by small brain case, bimolar teeth, facial prognathism बाहर की तरफ. The cranial capacity ranges from 4, ये याद करना है, काफी हेल्प रहेगा, 400 to 700 cranial capacity, strongly built supraorbital bridge, your eyes, massive jaws, absence of forehead, and number of other features resemble with apes. However, they differ from the apes. Different भी थे. Lack projecting canines, canines नहीं थे. Downward facing, foramen magnum and extended foramen magnum. Okay. An extended, expanded ileum. ऑस्ट्रेलोपिथेसिस इंक्लूडिंग डिफरेंट वेराइटीज. मैं कहूंगी कि इधर जाके आप थोड़ा सा इलियम, फोमेन मैग्नम का, हाँ, बायो आप जरा देख लेना, जब एडवांस में तो पूरी पिक्चर्स के साथ है. ओके, देन उसके बाद यू हैव डिफरेंट वेराइटीज, और यूपीएससी सब में क्वेश्चन पूछ चुका है. ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकन्स, एफरेंसिस, बोसाई, रोबस्टस, 10 मार्क्स का. ठीक है. देन ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकनस, रेमंड आउट, घर जाके पूरा पढ़ना है, टोंग चाइल्ड के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आ जाता है. So the first discovery of an Australopithecine fossil was made by Raymond Dart, an Australian anatomy professor in South Africa in 1924. He discovered well-preserved fossil from the commercial quarries near Tuang, South Africa. Okay. Then Efrensis, discovered by Donald Johnson. इन सबके फीचर्स बताए हैं. ओके, एफरेंसिस हो गया. लूसी काफी फेमस है, द लूसी स्कल, घर जाके पूरा पढ़ना है. देन होमो हेबिलिस, अगेन डॉक्टर लीकी एट ओल्डोवाइन ईस्ट अफ्रीका, और इस पे भी सिर्फ क्वेश्चन आया है, ओल्डोवाइन ईस्ट अफ्रीका. ओके, क्रेडल ऑफ ह्यूमंस. The remains, so the fossil remains of Homo habilis were discovered by Dr. Leakey at Olduvai in East Africa in 1962. The remains are parts of skull, upper jaw, and lower jaw. The Zinjanthropus and Homo habilis are contemporary representatives, but the Homo habilis is considered as more advanced time. According to Leakey, Homo habilis resembles Homo sapiens, but some scientists argue Homo habilis कुछ नहीं थे, वो Australopithecines के ही variations थे. Okay, then you have Homo erector, is an extinct species of Homo that lived in eastern and southern Africa during the early Pleistocene period. And then you have Pithecanthropus, Homo erectus,
I want all of you to go home and read these parts. Neanderthal, so this is for your homework. Cro-Magnon, more like human. They had also made beautiful cave paintings. Cro-Magnon was modified into modern human. Early forms of Homo sapiens. So Cro-Magnon fossil remains were believed to be the first species of Homo sapiens. With the London skull, 10 mark question आया हुआ है. Sonskov man, 10 mark question. Grimaldi man, 10 mark question. Then Homo sapiens sapiens. So ये 9.6104 जहां से मैंने स्टार्ट करा है, as it is याद करना है from basics. हेल्प होगा, ट्रेमेंडस हेल्प होगा. ओके, बेसिक्स डिटेल हम बाद में जब एडवांस पढ़ेंगे तब एक एक डिफरेंस को हम अच्छे से पढ़ेंगे. अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया. ओके, ह्यूमन जेनेटिक्स वी आर गोइंग टू रीड टुमारो. ओके, एवरीथिंग 1.6 1.5 का जो पार्ट है दोनों, monkeys chimpanzees वाला जो 1.5 का, that you do not have to write, not required, but do not skip anything for 1.6 like fossil evidences वाला, as it is याद करो. Okay, although when I would be explaining the advance, उसमें बहुत सारा discussions हैं. ऑस्ट्रोपिथेसिस में ये डिफरेंस था, उसकी ये कंट्रोवर्सी थी, ये कंट्रोवर्सीज थी. बट प्रॉब्लम ये होता है कि हम डायरेक्ट स्टार्ट करने लगते हैं सिलेबस, वो प्रॉब्लम है. ओके, so if somebody is like making their base stronger with SCERT, so you would say it would definitely make a difference to all of us. Okay, so tomorrow we would be covering human genetics. Again, I would be super slow. Okay, we will discuss blood type, this and that. तो अभी आपको पूरा बायो और सोशल का एक अंडरस्टैंडिंग हो गया. It will further help us to understand the debates in advance manner. Okay, thank you.